स्टूडेंट लास्ट वीडियो मानकरे आमे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विषय रे डिस्कशन करथिले। वर्तमान आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय रे डिस्कशन करिवे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सेक्सुअल सेल माने इन्वॉल्व रहंती। तो सेक्सुअल सेल माने जेहेतु इन्वॉल्व रहंती तेणु यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली की कहा जाए। What is sexual cell? Male sexual cell is called male gametes and female sexual cell is called female gamete. तो sexual reproduction रे male gamete and female gamete formation हुए। male gamete female gamete formation होला परे सेमानकर फ्यूजन और कॉम्बिनेशन that process is called fertilization and fertilization होला परे जाइगोट फॉर्मेशन हुए। जाइगोट टा अंडरगोज डेवलपमेंट है न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुए। तो एभली रिप्रोडक्शन को हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहू। The exact definition of sexual reproduction is the formation of male and female gametes and then fuse to form zygote is called sexual reproduction. Means जो प्रोसेस माध्यम रे मेल gametes and female gametes formation हुए। मेल gamete female gamete formation होला परे फ्यूजन हुए। फ्यूजन परे जाइगोट फॉर्मेशन हुए। जाइगोट का डेवलपमेंट है कि न्यू इंडिविजुअल रे डेवलपमेंट हुआ। So this process is called sexual reproduction. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Means sexual reproduction elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Asexual reproduction अपेक्षा sexual reproduction elaborate, complex and slow process. हमें पढ़िथिले sexual reproduction asexual reproduction simple and fast process, but in case of sexual reproduction it is elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Sexual reproduction is otherwise called amphimixis or syngenesis or amphigony. Means sexual reproduction को otherwise amphimixis इम्बा syngenesis इम्बा amphigony कहा जाए। The offsprings are not identical to the parent or amongst themselves because of fusion of male and female gametes. Means sexual reproduction रे जेहेतु male gamete एवं female gamete fusion हुए सेथाय offspring and parents are not identical एवं offspring मध्य मध्य किछि डिफरेंट देखा जाय थाए। So the offsprings are not identical to the parents or amongst themselves because of fusion of male and female gametes. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can produce sexually. That period of growth is called juvenile phase or vegetative phase in case of plant. Means समस्त organism सेक्सुअली भाବରେ रिप्रोडक्शन करिया पूर्वरु निर्दिष्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी रे पहुंची थांती तांको लाइफ टाइम रे। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इन केस ऑफ प्लांट दैट जुवेनाइल फेज इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे को इवेंट इन्वॉल्व हुए सेगुडा को events of sexual reproduction कहा जाए। First event that is pre-fertilization event. Pre-fertilization event means fertilization पूर्वरु जो event हुए ताको हमें pre-fertilization event बोली की कहो। Pre-fertilization event is divided into two types, that is gametogenesis and gamete transfer. Gametogenesis means it is a process
जो प्रोसेस रे मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फॉर्मेशन हुए। गेमेट ट्रांसफर मीन्स गेमेट फॉर्मेशन हे साला परे गेमेट गुडा को one place to another place to transfer होती, that is called gamete transfer. Event 2, pre-fertilization or syngamy event. Fertilization means the fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization or syngamy. Fertilization is otherwise called as syngamy. Event 3, post-fertilization event. मीन्स फर्टिलाइजेशन ପରେ जो इवेंट हुए से इवेंट को हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोली कि कहू। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को अगेन डिवाइड करा है, दैट इज जाइगोट डेवलपमेंट मींस जाइगोट और डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस मींस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो लास्ट 3 नंबर इवेंट दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट is divided into two types, that is zygote development and embryo development. Next is gametogenesis. What is gametogenesis? Gametogenesis means it is a process. The exact definition of gametogenesis, that is the formation of male and female gametes inside the gametophagia is called gametogenesis. Means जो प्रोसेस माध्यम रे मेल gametes and female gametes gametophagia भितरे फॉर्मेशन हुए से प्रोसेस को gametogenesis कहा जाए। So the definition of gametogenesis is the formation of male and female gametes inside the gametophagia is called gametogenesis. If the fusing gametes are morphologically similar, they are called isogametes or homogametes. यदि gametes morphologically similar थाए, morphologically similar देखिए आपको सेम साइज रो से भलिया gametes को हमें isogametes और homogametes कहू। Isogametes, homogametes is found in green algae like Holothryx and fungi Syncytium. Fungi Syncytium एवं green algae Holothryx रे isogametes गुड़ाक देखा पाई पाइबा। एमान को Holothryx and Syncytium रो gametes को हमें isogametes और homogametes बोली कि कहा जाए। Isogametes और homogametes देखिबा को सेम साइज रो सेमानकर साइज रे किछि डिफरेंट न थाए, सेमान देखिबा को सेम साइज रे। The motile small male gametes, if the fusing gametes are morphologically dissimilar, they are called anisogametes or heterogametes. यदि gametes गुड़ाक morphological dissimilar होती से पूरी gametes को हमें anisogametes और heterogametes बोली कर। morphologically dissimilar means देखिबा को अलग अलग गोटे gametes सामने होले आउट gametes बड़ कोई साइज रे से माने सामने बड़ होती से वाला gametes को हमें anisogametes और heterogametes बोली कि ना हो। anisogametes और heterogametes found in Chlamydomonas algae. Chlamydomonas algae रे anisogametes और heterogametes गुड़ाक देखिया को पाई परियो। Chlamydomonas रो gametes माने केतेक सामने रहंती केतेक बड़ रहंती साइज रे। सो Chlamydomonas रो gametes को हमें anisogametes और heterogametes बोली कि कहा जाए। The motile small male gametes are called microgametes or anthrozoids or spoke. Means motile small male gametes को microgametes और anthrozoids और sperm बोली कि कहा जाए। The non-motile large female gametes are called macrogametes or ovum or egg. Non-motile large gametes को
माइक्रोगेमेट्स और ओवम और एग बोली कहा जाए। Gametes are always haploid, but they are produced from either haploid or diploid plant body. Gametes गुड़ाक सब बेले haploid होती, that is N, but सेमाने haploid की बार diploid plant body को formation हुआ। Gametes गुड़ाक सब बेले haploid होती, किंतु से haploid gamete either haploid plant body रू नहले diploid plant body रू haploid gamete गुड़ाक formation Haploid parents produce haploid gamete by mitotic division. Means haploid parent माने haploid gamete formation करती by the process of mitotic division. Mitotic division द्वारा haploid parent गुड़ा को haploid gamete formation करती. Example: Monera, fungi, algae, and bryophytes are their plant body is haploid. Monera, fungi, algae, bryophytes plant body गुड़ाक haploid से haploid plant body को haploid gamete formation हुए. Diploid parents produce haploid gametes by meiosis division. Diploid parents meiosis division द्वारा haploid gamete formation करता है. Like Pteridophytes, Gymnosperm and Angiosperm, they are diploid plant body. They are produced haploid gametes by the process of meiosis division. Next is gametes transfer. Usually male gametes are motile and female gametes are non-motile. However, in some algae and fungi, both the male gametes and female gametes are motile. Means साधारणतः male gametes माने motile करती. Motile means one place to another place movement करती. Female gametes are non-motile. Female gametes are non-motile. They are cannot move one place to another place. However, in some algae and fungi, into algae and fungi रे both उभय male gametes and female gametes motile होती. Means algae and fungi रे both male gamete and female gamete one place to another place movement करी पारती. Like algae Olothrix, Cladophora, fungi Rhizophos, Syncytium produce motile algae. Olothrix, Cladophora, algae, Rhizophos, Syncytium fungus motile gametes. In monoecious plant, male gametes are transferred to the female gametes without any help of external agency. This is called self-fertilization. Monoecious plant means जो plant है उभय male and female gametangia था, से male and female gametangia रे male gamete and female gamete formation हुए. So monoecious plant रे male gametes transfer हुए female gamete पा male gamete transfer हुए female gamete पाखो को without any help of external agency. Without external agency द्वारा male gametes को female gametes को transfer होते in case of monoecious plant. So this type of transfer of gamete is called as self-fertilization. In dioecious plant, cross-fertilization is essential. The male gametes are transferred to female gametes by the help of medium. Means dioecious plant means जो plant माने गोटे plant रे male gametangia male plant another plant रे female gametangia थाए male sex organ and female sex organ पूरा separate होती से plant मानो को हमें dioecious plant बोली ना कहला. So dioecious plant रे गोटे plant रे male gamete formation हेले another plant रे female gamete formation होती. तो gamete को transfer समय रे किसी external medium
বা এজেন্সি দরকার হয়, লাইক ওয়াটার भी দরকার হই পারে, দ্যাট ইজ abiotic medium, that is water, wind, etc. and biotic medium or biotic agency, that is insect, some snakes, etc. means living organism mane help करंदी in gamete transfer, that is called biotic agent. In algae, bryophytes and pteridophytes, water act as a medium. Algae, bryophytes and pteridophytes रे water medium भाବରେ काम करे कोथि ना गेमेट ट्रांसफर माध्यम रे. water, bryophytes, algae और pteridophytes गेमेट ट्रांसफर समय रे साहाय्य करता है. In gymnosperm, pollen grains are pollinated to the ovule by wind. Gymnosperm रे pollen grain पराग रेणु गुड़ाक wind द्वारा ट्रांसफर होता है. That phenomenon is called anemophily. जो phenomenon माध्यम रे gymnosperm रे pollen grain गुड़ाक wind माध्यम रे ट्रांसफर होती से phenomenon का हमें anemophily बोल के कहो. In angiosperm, pollen grain are pollinated to the stigma by biotic and abiotic agent. Biotic and abiotic agent रो help रे gymnosperm रे pollen grain गुड़ाक ट्रांसफर होती. biotic agent means कोन living organism मानकर help रे pollen grain गुड़ाक stigma ଉପରେ ट्रांसफर होती. abiotic means non living like wind, water. non living agent मानक द्वारा angiosperm रे pollen grain गुड़ाक ट्रांसफर होती into the stigma. So pollination means transfer of pollen grain from anthers to stigma. anthor ru stigma को गेमेट रा ट्रांसफर हेबा माध्यम का में pollination मध्य कहा जाय. Next is fertilization or syngamy events. What is fertilization and syngamy events? The fusion of male and female gametes to form zygote is called fertilization or syngamy. It is a biological process जो process रे male gamete and female gamete fusion और combination है zygote formation हुए. This zygote, this is diploid cell. Male and female, it is also haploid cell. Male haploid cell and female haploid cell fusion है zygote diploid cell formation of a process को fertilization और syngamy कहा जाता है. Fertilization is two types based on the source of fusing gametes. Source of fusing gametes को बेस करके fertilization को दो भाग में डिवाइड कराई थी. Is type 1 endogamy or it is otherwise called as self fertilization. What is self fertilization or endogamy? Fusion of male and female gametes of the same parent is called endogamy. Means same parent रो male and female gamete रो fusion को हमें endogamy बोली की कहला. Example, it is uniparental. Same parent रे male gamete female gamete formation हुए एवं male gamete female gamete formation नहीं साला परे fertilization process द्वारा zygote formation हुए. It is example uniparental tenia tephua रे male and female gamete formation हुए और fertilization हुए. सेमिति अल्जीमम मिराबिलिस रे गोटे गोटे पेरेंट अल्जीमम गोटे पेरेंट मिराबिलिस गोटे पेरेंट एई पेरेंट रे मेल एंड फीमेल गेमेट फॉर्मेशन हुए एवं फर्टिलाइजेशन हुए. टाइप 2 एक्सोगामी, इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ टू gametes produced by different parent is called exogamy. Means एडी बाइपेरेंटल यूज हुए गोटे पेरेंट रे मेल गेमेट फॉर्मेशन होला को आ गोटे पेरेंट रे फीमेल गेमेट फॉर्मेशन हुए. कोन ना गेमेट्स गुडा को फ्यूजन होंदी बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट पेरेंट रे गेमेट गुडा को मेल गेमेट गोटे पेरेंट रे फॉर्मेशन है आ गोटे पेरेंट रे फीमेल गेमेट फॉर्मेशन हो. ना फीमेल बॉडी रो फीमेल गेमेट फॉर्मेशन हो, मेल बॉडी रो मेल गेमेट फॉर्मेशन हो. तापर फर्टिलाइजेशन हम से भलिया फर्टिलाइजेशन को एक्सोगामी बोली ना कहबा
क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोली कि हुआ जाए। एग्जांपल बाय पेरेंटल, बाय मींस डबल पेरेंट, इट इज मैन, मैन रे तुम देखियो पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होती मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल फॉर्मेशन करछथि। तो मेल मेल गैमेट फॉर्मेशन करिवो, फीमेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करिवो, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हे साला परे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द्वारा जायगोट फॉर्मेशन हबो, सेही प्रोसेस को हमें एक्सोगामी बोली कि कहबा। अनदर एग्जांपल दैट इज रैबिट, फ्रॉग, कुकुरबिटा एंड कॉक्सिनिया etc. Based on the structure of fusing of gametes, syngamy is three types. Gametes रो फ्यूजन को बेस करके बातर स्ट्रक्चर ऑफ gametes रो जो gametes फ्यूजन हुए तार स्ट्रक्चर को बेस करके syngamy को एवेन syngamy और fertilization को अगेन थ्री भाग में डिवाइड कराई थी। That is one isogamy or homogamy. That means fusing gametes are motile, morphologically similar but physiologically dissimilar. Means fusing gamete गुडाको motile रहନ୍ତି, gamete माने गोटे स्थान अन्य स्थान को मूव करि परନ୍ତି, that is motile, morphologically similar, morphologically means देखिया को माने देखिया को शेप किबा साइज रे समान समान रहନ୍ତି but physiological dissimilar, फंक्शन रे समान करो अलग अलग डिसिमिलर देखिया को पाइबा, फंक्शन रे अलग अलग फंक्शन समान करन, मेल गैमेट अलग फंक्शन करे, फीमेल गैमेट अलग फंक्शन करे, किंतु both male and female gametes motile and morphologically male and female gamete similar. Example Elothrix, it is one type of algae, Elothrix algae and Rhizopus fungus एक्सोगामी व होमोगामी शो करि थाए। एलोथ्रिक्स रो गैमेट को मोटाइल, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर देखै परबा। से परि राइजोपस रो गैमेट्स गुडा को मोटाइल एवं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर शो करन। टाइप 3 एनाइसोगामी, fusing gametes are motile and morphologically and physiologically different. Example algae, Pondarina and Chlamydomonas, it is one type of green algae. So anisogamy रो fusing gametes गुडा को motile रहନ୍ତି, morphologically and physiologically different, both morphologically and physiologically मध्ये माने different रहନ୍ତି। Example algae रो Pondarina algae रो gametes motile रहे और से gametes गुडा को morphologically देखिबा को एंड functionally that is physiologically different, morphologically and physiologically मध्ये different देखा जाती। से भलिया Chlamydomonas रो gametes गुडा को fusing gametes गुडा को motile रहନ୍ତି एवं physiologically and morphologically dissimilar शो करନ୍ତି। Type 3 oogamy. What is oogamy? Fusing gametes are motile and non-motile, morphologically also different. oogamy रे fusing gamete गुडा को motile रहନ୍ତି एवं non-motile मध्ये रहନ୍ତି, morphologically also different, ମାନେ देखिया तर शेप साइज रे अलग रहନ୍ତି, मींस मेल गैमेट अलग शेप थिला बेलु फीमेल गैमेट रो शेप बा साइज अलग रहे। सेही परि गैमेट्स को हमें oogamy रे देखिया को पाई परिबा। The motile small male gametes called anthrozoid. Motile small male gamete anthrozoid, or it is otherwise called as spermatozoid or spore. Spore, anthrozoid, spermatozoids, they are motile or non-motile gametes, and they are also known as the motile small male gametes called anthrozoids or spermatozoids or spore. The non-motile large female gametes is called ovum or egg. The large female gametes को हमें ovum किंबा egg बोली की कहा जाए। Next is what is difference between or distinguish or comparison between external fertilization and internal fertilization.
Last point, fertilization occurs outside the body of the organism is called external fertilization. Means organism मानकर बॉडी बाहर जो fertilization हुए ताको external fertilization बोली कहा तो fertilization occurs means fertilization हुए outside the body of the organism रो बॉडी रो आउटसाइड रे जो fertilization हुए से fertilization को हमें external fertilization बोली की कहो. Then fertilization occurs inside the body of the organism is called internal fertilization. Organism रो बॉडी भितरे inside the body organism मानकर बॉडी भितरे जो fertilization हुए ताको internal fertilization कहा जाए. Example, frog, bony fishes, majority of the algae. तो मैं जानी थी वो frog मानकर बेंगो मानकर internal fertilization external fertilization हुए, frog मानकर external fertilization हुए, bony fish मानकर external fertilization हुए, majority of the algae रे मध्य external fertilization show करता है. Here mammals, birds show internal fertilization. Mammals and birds रे body भितरे बा inside the body भितरे ताने समानकर fertilization हुए. Point 3, large number of gametes are released in the surrounding medium. Means body बाहर है ये fertilization होची जो body बाहर है जो medium रे इधर water रे हो कि body बाहर से कौन सा medium suppose होची water medium रे bony fish माने और frog माने fertilization करना. तो medium means medium होची water. What type of medium? Water रे large number of gametes release only and fertilization show करता है. Less number of ova are produced but large number of male gametes are released. In case of internal fertilization रे less number of ova formation हुए are produced but large number of male gametes are released. किंतु large number of male gametes released हुए किंतु less number of ova produced हुए. Point 4, the offsprings are extremely vulnerable to predators threatening the survival. Means जो offspring माने बाहर है बॉडी रो बाहर है fertilization की डेवलपमेंट होती तेणु जो offspring माने external fertilization करी डेवलपमेंट होती से माने vulnerable to predators. Predators माने से माने predator means harmful organism गुड़ाको bacteria, another harmful organism like bacteria, protozoa को predators बोलना कहा जाए. जो organism माने अन्यों ऊपर डिपेंड करते अन्यों को मारी दियंती ताको predator बोलना कहा. जे जदि external fertilization होची तो organism माने बॉडी रो बाहर डेवलपमेंट करिवे बाहर जे डेवलपमेंट होची predator मानकर भय रहता है तो predator माने से माने खाई जाई परंती तो threatening the survival से मानकर बंचिबा पाई जो offspring गुड़ाको external fertilization जो offspring formation होती से माने बंचिबा पाई भयभीत रहती. The offsprings are well protected comparatively. जेहेतु internal fertilization रे offspring गुड़ाको internally body रो भितरे रहती तेणु well protected से offspring माने well protected रहती as compared to external fertilization. Hello student, welcome to my class. Now we discuss about zygote development. In external fertilization, zygote is formed in the external medium, whereas in internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. Means external fertilization रे organism रो zygote external medium रे डेवलपमेंट हुए, but in case of internal fertilization रे zygote organism रो inside रे डेवलपमेंट हुए. Further developments of zygote
depends upon the life cycle and environment. Further zygote development hobo का ऊपर डिपेंड करके and depends upon the life cycle and environment. Zygote further development होगा zygote life cycle and environmental condition of environment को depend करके further zygote development हुए. In haploid life cycle, the zygote undergoes reductional division, that is meiosis, to form a haploid organism. Haploid life cycle रे zygote reductional division किंवा meiosis करी haploid organism तैयार करता है. In diploid life cycle, the zygote undergoes mitotic division. Diploid life cycle रे zygote mitotic division करता है. Zygote ensure continuity of species between organisms of one generation to the next generation. Zygote सुनिश्चित करता है. कौन सुनिश्चित करता है? Continuity species between organisms to the generation to the next generation. गोटे generation रो आउट generation मध्य लाइफ का को continuity बजाय रखना है. In algae and fungi, the zygote develops thick wall to resist desiccation and damage. Algae एवं fungi मान करे zygote गोटे thick wall formation करे जो thick wall desiccation and damage को protection provide करता है. Next post-fertilization event is embryogenesis. What is embryogenesis? The process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis. Means जो process माध्यम रे zygote रू embryo formation हुए से process को हम embryogenesis बोली करो. बा embryogenesis बोली के कहा जाए. In this process, the zygote undergoes mitotic division and cell differentiation. Means embryogenesis process माध्यम रे zygote mitotic division and cell differentiation करता है एवं new individual formation करे. The zygote develops outside the body of female parents is called oviparous. Means zygote female parent रो outside रो development होगा process को हमें oviparous बा जो organism माने female parent रो body रो outer surface रे development हुए that is called oviparous animal. Example reptiles, birds. Reptiles and birds को हमें oviparous animal बोल के कहवा. काहे ना reptiles एवं bird रो zygote development body रो outside रे पाई है. So reptiles and birds are called oviparous animal. The zygote develops inside the body of female parent is called viviparous. Means female parent of inside रो zygote development को हमें viviparous बोली कहू. Example human मान करो zygote development body रो inside रहता है. So human मान को viviparous बोली की कहा जाए. In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule, but zygote develops into an embryo. Flowering plant मान करे zygote ovule भीतर बा ovule inside ovule रे zygote development हुए, sorry zygote formation हुए, but embryo रे zygote का development हुए. Flowering plant मान कर कौन हुए ना flowering plant मान करे zygote ovule रे formation हुए किंतु zygote development embryo रे होता है. The fertilized ovule develops into seed and ovary develops into fruits. Fertilized ovule seed रे development हुए मंग ovary fruits रे development होता है. Next is differences are distinguish or comparison between gametogenesis and embryogenesis. Point 1. The formation of gametes from the myocytes or gamete mother cell is called gametogenesis. जो प्रोसेस माध्यम रे myocytes किंवा gamete mother cell रो
गेमेट्स फॉर्मेशन हुए से प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाए। एम्ब्रियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जो प्रोसेस माध्यम रे जाइगोट रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुए से प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाए। It is a pre-fertilization event. Gametogenesis is a pre-fertilization event. It is a post-fertilization event. Embryogenesis is a post-fertilization event. The cell division during gametogenesis is meiotic in diploid organism. Means diploid organism मानकर gametogenesis mitotic cell division हमारे पाइता है। In case of embryogenesis, the cell division during embryogenesis is mitotic in diploid organism. Embryogenesis रे diploid organism embryogenesis रे mitotic cell division द्वारा embryogenesis होता है। Point number 4, it occurs inside the reproductive organs. Gametogenesis reproductive organ रे होता है। reproductive organ रे gametogenesis होता है। It occurs outside or inside the female body. Embryogenesis female body रो outside रे किंबा inside रे होता है। Point number 5, it produce haploid gametes. Means gametogenesis produce haploid gametes. It produce diploid embryo. Embryogenesis diploid embryo formation करता है। Another differentiation is zoospores and zygote. First difference: these are endogenously asexually reproduce unicellular spore. Means asexually zoospore गुड़ा formation हुआंती एवं endogenously formation हुआंती। Endogenously means inside the body रे asexual reproduction द्वारा zoospore गुड़ा का formation हुआंती। Zygote is a diploid cell produced by fusion of male and female gametes. Zygote is diploid cell. तो diploid cell male एवं female gamete रो combination और fusion रो formation होता है। It is called zygote. It is biflagellated, non-motile. It is biflagellated or flagellated motile spore. Means जो स्पोर गुड़ा करे हमें फ्लाजेला गुड़ा को देखिया को पाइबा जेतु फ्लाजेला प्रेजेंट अछंती तो जो स्पोर गुड़ा को फ्लाजेला प्रेजेंट थवा दबो समान मोटाइल होंती। मोटाइल मींस मूवेबल, इस मोशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस रे मूवमेंट करथांती। मूवमेंट करिया पाए ए फ्लाजेला गुड़ा को हेल्प करथांती। मींस जो स्पोर गुड़ा को मूवमेंट रे फ्लाजेला हेल्प करथाय। जेतु जूस पर फ्लाजेला अच्छी तो they are motile spore. It is flagellated motile spore. It is non-flagellated non-motile diploid cell. Diploid cell zygote रो कोनसी flagella नथाय, so zygote is non-motile. It may be haploid or diploid. जूस पर गुड़ा को may be haploid किंबा diploid. It is always diploid cell. Zygote is always diploid cell. Point 4, zoospore takes part in dispersal. Zoospore गोटे स्थान को अन्य स्थान को जाई परथा है। Zygote does not have significant role in dispersal. जेतु zygote रे फ्लाजेला नाही तो गोटे स्थान को अन्य स्थान को zygote जाई पारे नाही। Another differentiation is apomixis and amphimixis. Asexual method of reproduction is called apomixis and sexual method of reproduction is called amphimixis. Means asexual भावरे
सेक्सुअल मेथड रे रिप्रोडक्शन करबा मेथड को हमें एपोमिक्सिस को सेक्सुअल मेथड रे रिप्रोडक्शन करबा प्रोसेस को एम्फिमिक्सिस कहा जाए। Embryo is not formed by fertilization. एपोमिक्सिस रे fertilization रे embryo formation हुएनी, means embryo is not formed by fertilization. Fertilization माध्यम रे embryo formation हुएनी, but in case of amphimixis, embryo is formed by fertilization. Amphimixis case रे fertilization process द्वारा embryo formation हुए. Offsprings are identical to the parents. Offspring गुड़ाक parents ठारू identical in same way. Parents and offsprings एका भली रहंती. But in case of amphimixis, offsprings are different from the parent. Offsprings and parents are different. Parents and offsprings different रहंती. It does not lead to evolution. Evolution means change. Evolution process एपोमिक्सिस रे lead करना है. But in case of amphimixis, it leads to evolution. Amphimixis evolution process को lead करी है. Example: vegetative propagation or reproduction by root, leaves, tuber, etc. एपोमिक्सिस रो एग्जांपल मानो जाता है. Sexual reproduction by rice, soil, etc. are coming under amphimixis. Thank you for watching.